दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चुनावों में एक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। 2024 में ये बड़ा चुनाव है। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर से दावेदारी अपनी पेश कर चुके हैं और इस चुनावी हलचल के बीच एक नाम बहुत ही ज़्यादा इस वक्त अमेरिकी मीडिया में छाया हुआ है और वो नाम है भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन अजय जैन भुतोरिया का, जो कि एशियन अमेरिकन मूल के लोगों के लिए जो बाइडेन के एडवाइज़र हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए फंड और समर्थन इकट्ठा करते आए हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल फाइनेंस के उपाध्यक्ष हैं। और अजय जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इनके कद को इससे भी समझा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो बैठक हुई थी टॉप 150 डोनर्स की, उनमें ये भी शामिल थे। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। तो हम शुरुआत आपके सफ़र के साथ ही करना चाहेंगे। राजस्थान से गुवाहाटी, तमिलनाडु और फिर MBA के लिए आप अमेरिका पहुँचे। दशकों से आप वहाँ पर काम कर रहे हैं और अब आप उस मुकाम पर हैं कि अमेरिकी राजनेता आपके ऊपर निर्भर हैं। तो कौन है अजय जैन भुतोरिया और क्या जो बाइडेन की दोबारा जीत की चाबी आपके हाथ में है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर टुडे। एज आपने कहा कि सफ़र लाडनू राजस्थान से शुरू हुआ, आसाम, गुवाहाटी और अब US में, और अब काफ़ी सालों से एज ए डेप्यूटी नेशनल फाइनेंस चेयर फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी और वर्किंग एज ए एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर एशियन अमेरिकन लोगों के जो है। हालांकि ये इंटरव्यू मेरे निजी पर्सनल पॉइंट पे है। So I've been been living in US almost for last 25 years, and I've been always a true Democrat. And when worked with President Obama and Vice President Biden, then work on Hillary Clinton's campaign as a co-chair for Asian Americans. And today I've been working, work on as day one member for electing President Biden in 2020. At that time, a lot of people were saying that there were other candidates, but we always believed that Vice President Biden is the next president of the United States, and now we firmly believe that President Biden is going to be re-elected in the 2024. President Biden ने अभी जो इतना काम किया है, he has gone the Science and Chips Act. उसके तहत what will happen is that the world की reliance जो ताइवान के ऊपर है chips manufacturing में, will be manufacturing those chips in United States locally under the leadership of President Biden's what he's doing initiatives. उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास किया जिसके अंदर पूरे US के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द लोवेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स राइट नाउ। यूनाइटेड स्टेट्स हैज रीस्टोर्ड इट्स लीडरशिप ऑन द वर्ल्ड स्टेज के ऊपर में। आज US के यूक्रेन वार में US साथ में खड़ा है। रशिया ने सोचा था कि 4 दिन में यूक्रेन को जीत लेंगे, आज कितने महीने हो गए एंड स्टिल यूक्रेन स्ट्रॉन्ग। इज़राइल और पैलेस्टाइन और हमास का जो इशू है, US स्टैंडिंग स्ट्रांगली विद इज़राइल, एट द सेम टाइम मेकिंग श्योर कि जो इनोसेंट सिविलियन पैलेस्टाइन है उनकी लाइफ को भी सर्वाइव। एट द सेम टाइम हमास हु इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्लाह इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इज़ कम्प्लीटली वाइप्ड आउट और पनिश्ड। तो वर्ल्ड लीडरशिप में प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो अमेरिका का जो लीडरशिप था वो रिस्टोर करके और हायर लेवल पे गए हैं। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री, there's a healing in the country. The country was divided during the Trump administration. Now there's a healing in the country. People are coming together. Still there's a lot of more work to be done. President Biden is a president for every American, not just Democrat or Republican, but he's a president for every American. So he's continuing doing that, and we all are working hard, and the deep work done by Vice President Kamala Harris, who is of Indian origin. She has been doing tremendous work, and I will tell you, both President Biden and Kamala Harris, they celebrated the largest Diwali last year, and I'm hoping that it will continue this year as well. So to bringing the people of the Kamala Harris के घर पे दिवाली में पानी पूरी, White House में पानी पूरी, and there was Bollywood music and Bollywood dance. So that shows how the diaspora's influence in the administration. President Biden has appointed more than 150 Indian American leaders in science, technology and other fields in his administration who are serving in the leadership capacity. Neera Tandon is one of the highest ranking who is leading the Domestic Policy Council in Biden administration. टॉप डोनर्स की मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ। उसमें एक लक्ष्य तय किया गया, चुनौतियों को भी डिस्कस किया गया होगा। चूँकि आप एशियन अमेरिकन मूल के लोगों का समर्थन जुटाना ये आपके लिए भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि जो एशियन मूल के लोग हैं उनके लिए हेट क्राइम जैसी चीज़ें भी बढ़ी हैं। तो ये चुनौतियां हैं। साथ ही साथ कुछ H1B वीज़ा के नियमों में भी बदलाव किया गया है। आपका उसमें बड़ा रोल रहा, प्रस्ताव आपने आगे रखा।
उसको भी बताइए कि आपके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये समर्थन इकट्ठा करना, और हर्डल्स क्या क्या होंगी। अब बेसिकली एक कह दें कि एकदम इजी है कि सारा समर्थन इमीडिएटली मिलेगा और मिलेगा, क्योंकि जैसा आपने बताया एशियन अमेरिकन लोगों के लिए हेट क्राइम इंक्रीज़ हुआ आफ्टर कोविड, और उसके बाद में इजराइल वार के ऊपर में काफ़ी सारी कम्युनिटी डिवाइडेड है। कुछ लोग एक साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ दूसरी साइड को सपोर्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो देयर आर ऑलवेज साइड्स ऑफ द पॉलिसीज़ एंड एक्शंस टेकन, जब पे दो साइड होती हैं। पर हमारा काम है कि सारी कंट्री को हील करके एक साथ करके टू मेक श्योर कि सारी एशियन अमेरिकन कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी प्रेसिडेंट बाइडेन को वोट करे। और एट द सेम टाइम ये इलेक्शंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसके लिए हमें रेज भी फंड रेजिंग जो है कितने का लक्ष्य रखा गया है सर? लास्ट टाइम शायद हमने जो स्पेंड हुआ था समथिंग अराउंड $2 बिलियन कुछ स्पेंड हुआ होगा। तो वी डेफिनेटली विल बी नीडिंग मोर और इक्वल और मोर, सो विल बी कंटिन्यूइंग वर्किंग टुवर्ड्स एज मच एज वी कैन रेज, and there's a very systematic process of raising money, and we continue to follow the protocols to raise the money। और उसमें हमारे सभी कम्युनिटीज़ के लोग बहुत अच्छा जो सपोर्टर है डोनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स like for last few years I've been only one of the Indian American who is on the Deputy National Finance Chair, so in that role, so my role is to bring communities together as well as raise money and also make sure that we have grassroots support। So last election में I ran something very interesting, आप भी कोई वीडियोस देखेंगे जो हमने 19 लैंग्वेजेस में which including lot of Indian language, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, गुजराती में कैंपेन रन किया, जहाँ में हमने वीडियोस बनाए। We wanted to make sure that voter understands that the Democratic Party values each and every voter and will reach them in their own language। उससे हमारा टर्नआउट जो है बहुत इंक्रीज़ हुआ। तो विल कंटिन्यू डूइंग सो। और जहाँ तक बात रही अजय भुतोड़िया की जर्नी का, तो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी टू दैट इट वाज जस्ट नॉट दैट वर्किंग फॉर IBM और प्राइस वाटर हाउस, बट एट द सेम टाइम इट्स important that we have a seat at the table, not just a donor। So at that point in time I said कि we have to get involved and do some grassroots work, and I'm fortunate to get involved through Democratic Party with President Obama, and then meeting him for the first time was like but then he made me feel so comfortable, and from there after I met him so many times and we had hosted President Clinton at my house, or the First Lady at my house, and several other Democratic Party leaders, and that gave me the strength that we represent our community, our values and our culture, and be part of it। At the same time we share the vision and dream of our president। जी, और इन सब के बीच इस जर्नी में आपने अपने एथिक्स वैल्यू को बिल्कुल कायम रखा, और कुछ तस्वीरें ही बड़ी यहाँ पर लोगों को खुशी देती हैं कि यहाँ के तमाम जो फेस्टिवल्स जिस तरह से हम यहाँ मनाते हैं अब हम वहाँ भी देखने लगे हैं। फिर चाहे वो गणपति पंडाल हो, फिर चाहे वो छठ पूजा हो, उसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। वो सब भी, उसके पीछे भी आपका एक बड़ा हाथ रहा। बिल्कुल। मेरी एक हमेशा से इच्छा थी कि जो जैसे मुंबई में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होती है और लोग गणपति बप्पा मोरया चैंट करते हैं और बड़ी विसर्जन करते हैं, हम भी वैसा कुछ करें वहाँ पे, पर समझ में नहीं आया कैसे करें। तो कुछ फ्रेंड्स थे जो महाराष्ट्र के फ्रेंड्स थे मेरे, उनके साथ मैंने बात की, एंड दे टॉक टू द सिद्धि विनायक टेम्पल। आज से 15 साल पहले की बात कुछ है। और फिर इन्होंने एक बड़ी मूर्ति भेजी और वहाँ पे हमने प्रतिष्ठा किया उसको, और वहाँ पे कॉल किया सिद्धि विनायक टेम्पल फ्रीमोंट। तो वो एक शुरुआत थी। वहाँ से फिर भगवान की महिमा से बहुत लोगों ने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करना शुरू किया, और पहले भी करते थे, फिर बहुत ज़्यादा मास स्केल पे होना शुरू हुआ। फिर हमने एक क्रूज़ हायर किया गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे, सब लोग अपने सर पे गणपति बप्पा मोरया करते हुए लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम लोग क्रूज़ में गए और गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे जाके विसर्जन किया। फिर उसकी तस्वीरें पूरे सब जगह फैल गई। अब आज अमेरिका के हर सिटी में गणेश चतुर्थी इतने बड़े रूप में सेलिब्रेट होती है। फ्रीमोंट जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हमारे फ्रेंड्स लोग मिलके 25 फुट के गणेश जी की, जहाँ 30 से 40 हज़ार लोग आते हैं। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, हर सिटी में सेलिब्रेट हो रहे हैं, सिएटल। और आज ये अच्छा है, हमारे जो यंग जनरेशन है वो हमारे कल्चर से, हमारे वैल्यूज़ से, हमारे हमारे प्रिंसिपल से, स्पिरिचुअल फिलोसॉफी से जुड़ के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कब से ये रिश्ता अजय जी अगर बता सकें ये बेहतर होना शुरू हुआ है और खुलकर इस तरह का सेलिब्रेशन हम देखते आ रहे हैं? देखिए, US इंडिया रिलेशनशिप हैज़ बीन ग्रोइंग सिंस ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। जब प्रेसिडेंट ओबामा थे तो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ विज़िट किया था, उसके बाद में प्रेसिडेंट ने विज़िट किया था। जब वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन ने जब इंडिया विज़िट किया था, व्हेन ही विजिटेड, ही सेट अ टारगेट कि उस टाइम जो बिज़नेस US इंडिया ट्रेड हो रहा था बहुत कम था। ही सेट कि हम
10 साल में 500 बिलियन तक हमें ट्रेड को या 250 बिलियन का कुछ टारगेट था उस टाइम, वहाँ पहुँचाना है। आज टारगेट शायद 500 बिलियन से जाके और उससे भी उसको भी डबल करने की जो वो हो रहा है। और जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी आए, उन्होंने जो उनकी लीडरशिप में और फिर प्रेसिडेंट ओबामा की लीडरशिप में और अब प्रेसिडेंट बाइडेन की लीडरशिप में जो यूएस इंडिया रिलेशनशिप जो ग्रो कर रहे हैं, वो विजिट जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए तो फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वर लाइक 4,000 to 5,000 इंडियन अमेरिकन्स इन द वाइट हाउस, जो कभी ऑर्डिनरी थिंग में सोच भी नहीं सकते कि हम वाइट हाउस में इस तरह से जा सकते। वो लोग वहाँ पे थे। उस टाइम हमें नारे भी सुनाई दे रहे थे, भारत माता की जय और वो सब, तो वो बहुत अच्छा लगा। और देख के कि जो इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप, जो दोनों लीडर्स के रिलेशनशिप है, जो मोर पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप इतने ग्रो कर गए कि आज सारी हमारी कम्युनिटी वहाँ पर थी, हमारे लोग वहाँ पे स्टेट डिनर हुआ, स्टेट लंच में आई वाज सिटिंग विद मुकेश अंबानी जी एंड नीता अंबानी जी के साथ में टेबल में थे। तो ये सारे लीडर्स के पीपल टू पीपल रिलेशनशिप ग्रो हुए एंड दिस इज़ कंटिन्यूइंग टू ग्रो। आज यूएस इंडिया रिलेशनशिप इज़ ग्रोइंग इन द डिफेंस सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। उस मोदी जी की विजिट के बाद में देयर विल बी एटॉमिक एनर्जीज बोल कंपनी है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी, जो इंडिया को चाइना बॉर्डर या जो डिफेंस बॉर्डर है उसमें मॉनिटर करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा द मोर देन यूएस नीड्स इंडिया और इंडिया नीड्स यूएस नीड्स इंडिया टू काउंटर बैलेंस चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, जो पैटर्न जा रहा है टू डोमिनेट द वर्ल्ड इन सर्टन एरियाज, टू काउंटर बैलेंस दैट द क्वाड वाज फॉर्म्ड with India, US, Japan and Australia, and that leadership is Quad is not just limited to the defense cooperation. Quad is growing in business, Quad is growing in many other economics and other areas. Same way, India is emerging as the world's largest economy. India is a country which has almost 40% youth power, and which country which is so young. You think about the future, it can change. There are every day there are hundreds of new startups are coming in India, and they are becoming the unicorns and leading towards. So India is towards, I think, becoming number 2 or number 3 economy in the world, and the partnership is growing stronger and stronger. And we will see. I would like to see, and we could be seeing in future, more cooperation in defense, more cooperation in healthcare, more cooperation in semiconductor opportunities, more cooperation in education, and that's all growing up. I mean, भारतीय प्रवासियों के लिए अगर बात करें जय जी, तो समय कितना बदला है या मजबूत हुआ है जिस समय से आप पहुंचे? अगर 25 साल पहले का हम देखें और अभी 2023 में क्या ज़मीन बन पाई है भारतीय प्रवासियों के लिए? पहले जब किसी भारतीय को अगर एक वाइट हाउस में बुला लिया जाता था तो दैट वुड बी ए न्यूज़ फ्लैशिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कि एक इंडियन आज वाइट हाउस गया है और आज उसको प्रेसिडेंट ने बुलाया है या मिले हैं या उनको नोता मिला है। नाउ देयर आर 150 पीपल वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द वाइट हाउस हु आर or in the other agencies who are Indian Americans today. Today Indian Americans are leading almost every major organization as the CEO, whether it's Google or Adobe or Microsoft or any other organization you name them. They are today Indian almost I may be wrong, but 60 to 70% hotels and the hotel industry is owned by Indian Americans, primarily from Gujarat, right? So that way the trucking industry is mainly run by people from Punjab. So there are, and then now in the political world, पहले होता था कि Indian American is running for a member of Congress or Indian American is running for a mayor or city council. It used to become a news. Now almost every other day youth or young generation is deciding to run for office, and we see candidates who are coming up. There's a strong pipeline. Even in last two years, there are several Indian Americans who have won in several cities as city council members, school boards, college school boards, or mayors or local state senators, etc. So the influence is growing up, not only, and the contributions are huge. They are one of the largest contributors in the economy. They are creating jobs and businesses, and also at the same time they are keeping their culture and heritage and spirituality alive. ये आप चर्चा कर रहे हैं तो सर एक नाम मेरे जहन में आ रहा है, विवेक रामास्वामी। बिल्कुल, रिपब्लिकन हैं और भारतीय मूल के हैं। बहुत ही कम समय में लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है। क्या वो सामने एक चुनौती के तौर पे दिख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने विवेक रामास्वामी का नाम लिया, फर्स्ट मैं क्लियर कर दूं, व्हाटएवर ही सेज आई डिसएग्री विथ हिम, राइट?
क्योंकि to me he is not making any sense as a Democrat. Whatever he is saying, I completely disagree with him. But I am very happy to see as an Indian American who proudly calls him as a Hindu, and who's running and leading number 2. अगर recent polls मैंने देखे नहीं है, maybe number 2 or number 3 in the Republican Party candidate, which is a hardcore conservative candidate, which shows how America is changing. They are willing to accept a candidate who is proudly saying that he is a Hindu, but he respects all religion, and they are willing to accept him and his ideas. I disagree with every one of them, but they are willing to accept him, and he's being one of the largest party, Republican Party, uske number 2 hai, and God forbid that if something happens to Trump and or some just judicial challenges comes on his way, Vivek could be the nominee. एक सर्वे सर अमेरिकी मीडिया में खूब चर्चा में रहा, जहां पर बताया गया अगर आज की तारीख में चुनाव होता है तो कड़ी टक्कर होगी। उधर से अगर ट्रंप होते हैं, इधर से बाइडन हैं, और करीब करीब बताया गया कि 46% का दोनों को समर्थन मिल सकता है। करीब 7 से 8% एक ऐसा परसेंटेज होगा जो तय नहीं कर पाया है। तो उनको अपनी तरफ करने के लिए क्या रणनीति होगी, और क्या वाकई आप इत्तेफाक रखते हैं कि टक्कर है? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से। आज भी हम लोग शायद अक्टूबर में बैठे हैं, चुनाव 8 नवंबर को होंगे, ऑलमोस्ट 1 साल है, राइट? तो इट्स टू अर्ली टू से अबाउट दीज नंबर्स एंड दीज फिगर्स, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू से दैट वी डू नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड कि ईजी है। वी आर वर्किंग हार्ड। अभी डेमोक्रेटिक पार्टी इज स्पेंडिंग देयर मनी on general election. We are building the ground infrastructure in the battleground states of Michigan, Pennsylvania, Georgia, या फिर बाकी जो नेवाडा है और बाकी states है, Arizona, वहाँ पे we are building infrastructure. We are building our teams. We are building people who are do the groundwork and get out the voter outreach. We are making sure people are registering to the vote. On the other hand, the Republican Party is continuing with their primary challenge, with their fighting within themselves and bringing each another down and then continuing. We don't know who the candidate is going to be. We cannot say whether if it's Trump. The country knows how many indictments he has from the court right now. Maybe 80, 90. We'll forget the count, right? And those are serious criminal charges. If anybody else was a normal American was facing those criminal charges, he would be like afraid that he would be behind prisons in few days. And if people are going to choose that kind of candidate to represent them, they should be thinking twice. Even if they are Republican, they should be thinking twice that they should be considering other Republican candidate and not something who is facing serious charges. In spite of that, if they choose to nominate him as their candidate, you know, the Democratic Party is very well prepared, very strongly prepared, and the country understands the amount of work which President Biden has done in very short few years in reviving our economy. In Bidenomics is working and in bringing the world leadership, and is continuing to grow. People will decide and people will choose to vote for Biden and Biden Harris, and they will vote for Biden and Kamala Harris, and they will re-elect them. जिस तरह से वो टारगेट करते आए हैं उनके कार्यकाल को लेकर, उनके टेन्योर को लेकर, जो बाइडेन के, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? No, it's okay to attack your opponent, but there has to be some substance. Most of the जो अटैक जो ट्रम्प के होते हैं वो पर्सनल अटैक्स होते हैं. We have seen his personality. He tries to do personal attacks on people, whether his own party के people होते हैं या own होते हैं. उनके पास policy based अटैक्स नहीं है कि कहें कि ये इनकी इकोनॉमी पॉलिसी गलत है एंड आई हैव ए बेटर इकोनॉमी पॉलिसी, इनकी फॉरेन पॉलिसी गलत है, आई हैव ए बेटर फॉरेन पॉलिसी. विवेक रामास्वामी, ही सेज कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद कर दो, ही सेज कि FBI को शट डाउन कर दो, ही सेज कि H1B वीज़ा ख़त्म कर दो. These are not practical things. H1B visa. Every major US company relies on technology, STEM skills set people. Majorly 80% of coming from India. Their companies are run by, the innovation is done by people from India, and in some cases people from Philippines, China and Vietnam. Those are the major, and then there are people from all part of the world. So your own companies will not run, your system will shut down. So that has no logic. Same way Trump talks in the same way. So these things do not make any sense, and people understand that. Even the corporations understand, general people understand. These are all good to create news headlines, and that's all he wants. I mean, but he's not delivering anything.
अमेरिकन फर्स्ट का इस तरह से नारा रखकर जो उन्होंने समर्थन हासिल किया, और जो अभी भी अगर सर्वे में दिखा रहा है कि अराउंड 46% का है, जो कि कांटे की टक्कर दिखाता है, अगर वो समर्थन है तो ये कैसा समर्थन है सर? और वो इस चुनाव में आपकी तरफ किस हद तक आपको लगता है कि जाएगा? मैं अगेन इन नंबर्स पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वी डू नॉट बिलीव दैट दिस नंबर्स आर वैलिड एनी मोर. इट्स टू अर्ली फॉर इलेक्शंस, बट people are going to support President Biden on his work which has been done, and they are seeing the things which I just repeated. They are going to vote on his agenda. But we also accept that there's a hardcore supporters of Trump. No matter whatever he does, they will continue to support him. And we are not going to pursue to have them change their mind. We'll present them the data, we'll tell them, we'll look out, we'll bring them. But then there's a huge number of Democrat supporters, and if they turn out, what is happening in the country? You know, women's के right में abortion is a big issue, right? They are attacking LGBTs, they are attacking on religious minorities and religion. Trump, I think if I just correctly follow the news, he said if he comes, he will do the Muslim ban again, and then they are planning to cancel the H1, and these are serious issues which people wants to support, so they will automatically come and support the Democratic Party. And there's only two clear choice, whether you vote for President Biden, Kamala Harris, or you vote for Trump in case he's a politician. And people have seen his administration, people have seen how divisive he was, and so there's a clear choice. I mean, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि what I've seen the India change in last 8 years, 10 years, there's a tremendous amount of growth, there's tremendous amount of confidence, and world leadership में India has grown so much under leadership of Prime Minister Modi ji. India has grown in every other field. I mean, a few days back we had the Railway Minister of India come there and do a presentation, and we saw that some of the railway stations are looking like 5-star hotels. From the visuals what I saw, I have not personally visited them, but that's a dramatic change. Or whether we talk about the infrastructures and roads which are 4 to 6 to 8 lanes highways, and those are dramatic changes. Whether we talk about people having access to banking system and everybody having a bank account, that's a huge change. Whether we are talking about, there are certain processes in US जहाँ पे digitization of process हो गया कि आपको passport renew करना है, आपको ये करना है, which is much easier than compared to what is in US, what is being done in India. So these are small examples I've counted, but those makes a huge change in the overall growth. There are startups which are growing in the medical industry. I will tell you, when the world was struggling with COVID, India became the pharmacy of the world, and India supplied a lot of COVID related supplies to the world. So these things are what the people of India, the administration of India, and under leadership of Modi ji is doing. So I am sure that in spite of the huge diversity in India, in spite of huge differences, the people will continue to support and vote the leader who's bringing the change, and those crucial, the agenda will continue to forward. India was able to get to Mars and Moon in 1/4 or 1/6 of the dollar amount which NASA or the Russian Space Agency who have been able to do. So it's just not the roads, but it's also the building the roads on Moon or Mars, right? India is leading the world, and India is leading now in major economics. Now, if I quote Jaishankar ji, he was saying in some that the West European countries primarily used to look that India has to follow what they say. But India is self-determined. India decide what is their foreign policy should be, which is for the first, which is supposed to benefit, and then rest to benefit of the world. So no longer any of the countries, whether Canada today tried to put certain allegations which were baseless, and they stood out and they fall apart. I mean, right? So I feel that the elections in both the countries are crucial to carry forward the agenda of growing the economy, growing opportunities for people, jobs and education in both the countries, and both the leadership I think will continue moving forward after the election. कनाडा की सर आपने जो जिक्र की, उसके जो आरोप लगे थे, उस पर यूएस के स्टैंड को अगर और साफ तरीके से आप रख पाएं. I will give you my personal opinion, and it's completely my personal opinion. Right. What I feel is that diplomacy, when the Prime Minister or President of a country is speaking, that their word carries a lot of value. And when you have a difference of, this was a minor nature difference, that candidate about whom is being spoken, he was an Indian citizen for many, many years, and he was a Canadian citizen for a short period of time. Whatever the truth is,
that has to be handled diplomatically behind the scene with with communication, engagement and discussion, and both sides present the fact and data and discuss and hash it out. Putting baseless allegations, something which is a very confidential information. Justin Trudeau could put an allegation, but he cannot cite that confidential. His Secret Service agency will not allow him to share that confidential information, whatever he has, in public. Evidence nahi hai. So then how can you substantiate your allegation towards a country where where large percentage of people are from this country? What you are doing is that you are hurting those people, that you are telling them that we don't respect your own country. Then how can you respect those people while they are there? If people who are from Gujarat, people who are from Punjab, people who are from there, they have to understand that by disrespecting India, he is disrespecting them. आपके घर, जिस घर से आप आए हो, जिस माटी से आए हो, उससे आप रिश्ता इतना उस कंट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, कह रहे हो कि ये मेरा कनाडा का सिटीजन है, उसकी ओरिजिन कहाँ से, आप उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो. So he is disrespecting everyone. So which means that I am completely, whoever is the next leader from Canada opposition party, I am sure he is looking at it and the people understands, and he will work on improving leadership with India, which is one of the largest and the fastest and the leader of the world right now, growing leader of the world. जी सर, ग्लोबल क्राइसिस का अगर हम जिक्र करें, रूस यूक्रेन वॉर के बीच में अब हम देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या हो रहा है. इस बीच एक डर दुनिया को ये भी है कि कहीं एक्टिवली यूएस और ईरान इस युद्ध में शामिल ना हो जाए. उस डर पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, इट वाज अराउंड 4 years बैक, एपेक बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में, जो लार्जेस्ट ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन है. They take around 15 people, progressive leaders every year on a 15-day trip to Israel and Palestine. And I went. आप खुद भी दौर में जा चुके हैं. हम उस टूर में गया था. I went to Gaza. I went to किबूज, जहाँ पे हमास, जहाँ से एंटर करके उस विलेज में सबको गोलियाँ चलाई थी. I went to किबूज, जहाँ पे वो पार्टी चल रही थी, जहाँ पे हमास ने अटैक करके 150 लोगों को किया था. I went to West Bank, Ramallah. I met the Deputy Prime Minister of Palestine. और उसके साथ डिस्कशन हुआ था. आई वेंट टू सीरिया, इज़राइल बॉर्डर. आई वेंट टू लेबनान बॉर्डर. सो द स्ट्रक्चर विच आई अंडरस्टूड वाज दैट कि ईरान का एक मकसद है और हमास हैज़ 2 parts. वन इज़ द रूलिंग द गाजा एज ए इलेक्टेड बॉडी, एंड देन द मिलिट्री बॉडी विच हैज़ वन चार्टर टू फिनिश wipe out Israel from the face of the earth. Iran also has similar agenda. This is what I understand, and they are operating through Hezbollah. Now, on that, US is standing strong with the Jewish community, with the Israel. At the same time, US is strongly supporting all the Palestinian people. And I personally, when I see those visuals, my heart aches for the poor people of the Palestine who are suffering. But at the same time, Israel has the right to defend themselves, right to protect themselves. Israel did not go and attack Hamas. It was Hamas who fired 5,000 plus rockets. It was Hamas who killed people in Kibbutz. It was Hamas who killed people in that party, over 1,500 killed. So if you are spending every dollar of yours which is given to you in aid on killing people, then you have the right to defend and have a military operation. But US is also making sure that the people of Palestine are getting aid. People of Palestine are being supported. Hamas has built a tunnel city. Gaza is nothing but 25 kilometers long and 6 kilometers wide. उसी के नीचे उन्होंने 30 ज़मीन से 30 फीट नीचे पूरी टनल सिटी बना ली है. They operate, they come out, they operate, they go back, and then the normal people get killed in those firings and things. So that has to. So this has to. And then Syria and Lebanon Iran wants to jump in the war. Iran will be making the biggest mistake if they decide to attack Israel or anything. US, I think President Biden made it clearly in his speech that US will respond to it, and that could not be good for Iran. So I think that's very important for those actors to keep in mind. There was, under the leadership of President Biden, the peace corridor was being built with Saudi Arabia, Israel and US, and bringing more Arab countries together. There's a wider acceptance for Israel. And India is going to play a stronger role in there as well. India has a strong relationship with Israel, as well as India has a good friendship with Iran. India could be a leader in bringing the peace, brokering the peace in that region. इंडिया के स्टैंड बदलते आए हैं सर इस मामले पर. अभी का जो स्टैंड है भारत का, उस पर आप क्या कहेंगे?
I think India has been traditionally has been a very cautious in taking their stance in the country. India-Israel relationship is one of the biggest relationship. India has the opportunity to learn a lot from Israel in counter-terrorism. India has suffered counter-terrorism from across the border in Kashmir, across the border in other, now somewhere around from China in parts of the northeast and other thing. So India has a lot of opportunity and Israel has one of the best technology and best people, trained people in countering terrorism. They have to do ground fights every day with Hamas, Hezbollah and everybody else. So that partnership, as well as in agriculture, if you see the sprinklers around here, this technology was literally invented by Israel in cyber security. So Israel and India is also leaders in many of the parts which Israel needs. So there's a growing partnerships and there's growing. At the same time, when I was a kid watching Indira Gandhi with Yasser Arafat, with the Palestinian leaders, right? Yeah. And that was at that point of time, that was the India's position that time. But world has evolved, geopolitics have evolved, and the position which is India taking now to support Israel, but at the same time stand for medical aid, and I heard that they are sending a lot of support to Palestinian people. I think India is doing the right thing. जो यूएस को सवालों में खड़े कर रहे हैं कि जो हालात हैं फ़िलिस्तीनियों के, उनको क्या आप जवाब देना चाहेंगे अब तक के इतिहास को देखते हुए? आई थिंक इसमें अगर हम इतिहास को देखें, वो रीजन था जहाँ पे अराउंड, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट, समथिंग अराउंड 1947 1948 ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया. उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान क्रिएट किया और वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट किया, जो बाद में बांग्लादेश बना. बीच में इंडिया था. आज अगर वो वेस्ट इंडिया अगर उसको इंडिपेंडेंस में हेल्प नहीं करती बांग्लादेश को, और वो वेस्ट पाकिस्तान रहता, तो यहाँ पे वही एक कॉरिडोर होता जहाँ से पाकिस्तान कहता मुझे उधर जाना है, आना है. और सेम सिचुएशन जब व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट, they created Gaza, they created West Bank, and they left this Israel in between. Now, on the other side of the border of Israel, there is Iran and Syria and Lebanon, and they are digging tunnels. They're bringing all the weapons and missiles. Either say they are digging tunnels and they want to destroy the country. So what are they supposed to do? America has said, okay, fine, we'll provide you the Iron Dome, which will support you from all the shelling which is coming with Israel, and the Iron Dome to a certain extent protects, right? Jews did not go out and attack directly. Now the stories could be different. What I went there personally and I met people, I saw the part. I mean, Israel is supplying the daily electricity, internet, and so many things to Gaza. At the same time to West Bank. But at the same time, the people of Palestine are also suffering. But under whose hand? They're not suffering in the hands of Israel. They're suffering under the leadership of Hamas. If Hamas decides to change today, give up, I'm sitting here at a Jain event, with Jainism, which is the principle of non-violence. If Hamas decides to change itself, and they say, fine, we are accepting the two-state solution, Gaza could be converted into a Singapore, which could be a highly growing area. But because of Hamas is not letting to grow. And now if you have continuously an organization which is sponsoring terrorism and creating terrorism, what are you supposed to do? You are supposed to stand with a friend and support. That's what US is doing. US is standing with Ukraine, US is standing with Israel, and US is standing with Taiwan. And US is going to stand with every country, every democratic country which is following the principle of democracy and also human values. I'm sitting here today at one of the world's largest gathering of Jain community, Jain Theravada community. यहाँ पे हमारे जैन धर्म के हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर हिज होलीनेस आचार्य मास रमन जी, उनके साथ में उनके 500 से अधिक साधु साध्वी और संत यहाँ पे है, और हज़ारों की तादाद में जैन कम्युनिटी और नॉन जैन कम्युनिटी के लोग यहाँ पे विराज आते हैं और उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए. ही स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस, लव एंड हार्मनी विच इज़ द वर्ल्ड नीड्स टुडे. महात्मा गांधी ने जो मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस दिया था, मैसेज सत्याग्रह दिया, वो कहीं ना कहीं जैनिज़्म से इन्फ्लुएंस था. मार्टिन लूथर किंग ने जो मैसेज दिया था वो भी जैनिज़्म से इन्फ्लुएंस था. तो आज जो जैनिज़्म का मैसेज है, जस्ट नॉट नॉन वायलेंस, आज वर्ल्ड जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपने हेल्थ को और अपने मेंटल हेल्थ और अपने फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है. फास्टिंग कम्स फ्रॉम जैनिज़्म. आज वर्ल्ड जो है अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन और प्रेक्षाधान करते हैं. दैट कम्स फ्रॉम जैनिज़्म, जिनके प्रेक्षाधान के फाउंडर थे आचार्य
श्री श्री महाप्रज्ञा जी, जी लेट मी स्टॉप हियर एंड देन यू से महाप्रज्ञा पुरस्कार आपको मिल जी, रहा है। जी तो उनके प्रेक्षाधान के जो बनाया था आचार्य महाप्रज्ञा जी थे, और आज के जो वर्तमान हमारे आचार्य श्री श्री महाश्रमण जी, वो पद यात्रा करके ही पूरे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। उन्होंने नेपाल से नेपाल और उसके बाद में आसाम और दिल्ली, कलकत्ता, अब बॉम्बे में है, फिर सूरत, अहमदाबाद, पूरा भारत भ्रमण करते हैं और सभी से मिलते हैं, सभी को शांति का मैसेज देते हैं और जीने का तरीका बताते हैं। तो मेरा भाग्य आज मैं उनके साथ मिलना हुआ। और बिल्कुल, और हर साल आप आते हैं सर, आप यू मेक श्योर कि आप ये विजिट करें, और इस बार आपको आचार्य महाप्रज्ञा पुरस्कार से भी नवाजा गया, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये मेरा आई एम वेरी ग्रेटफुल कि 5 मिलियन जैन में से उन्होंने मुझे इस लायक समझ के जैनिज्म का ये सबसे बड़ा अवार्ड है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है, इसके लिए मुझे इन्होंने चुना और कल ये अवार्ड यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था हिज होलीनेस आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रेजेंस में और उनके ब्लेसिंग से। और ये बेसिकली ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है, ये अवार्ड हर उस पीस लविंग इंसान के लिए है जो दुनिया में पीस, शांति और वैल्यूज़ ड्रिवन ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जहाँ में हमारी एथिक्स, हमारी वैल्यूज़, हमारी जो जीने का तरीका है वो जो सही हो। एज ए गुड ह्यूमन बीइंग वी कैन लिव एंड वी बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस टू अदर एंड ऑल्सो सर्व एंड हेल्प अदर्स। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।